I would be taking you over for a very different topic, which has been a talk of the town: managing tantrums in kids the right way. I am very happy to have Dr. Santosh Yadav and Dr. Noopur, who have joined this session to discuss this really important topic. But before we begin, I would like to take you through what is BabyChakra. BabyChakra is a very good parenting platform which has been addressing live sessions through experts' help and through doctors who शिक्षक come साथे on बात this करिए. platform and also give their valuable information. But before we kickstart with the topic, I would like Dr. Santosh Yadav to give a brief introduction about himself. Dr. Santosh? Hello, family of BabyChakra. This is Dr. Santosh Yadav, a pediatrician, fellow in neonatology with interest in educate to eradicate. What does that mean? That means to educate my parents, my kids, grandparents about the importance of prevention of diseases and health related issues so that we can prevent them to happen, right? And Right. I have a special interest in parenting with how does my baby think, how does my parent think, and what precautions or what measures and how should we talk with my babies so that they behave well. I Wow. work in Nirmal Hospital. It's a private limited hospital, one of the topmost hospital in Surat, South Gujarat, and we have a specialized PICU, NICU in Surat, and with that we help community for healthy living. Right. Thank you, Dr. Santosh, for such an amazing introduction. Dr. Nupur, over to you. Can you please introduce yourself? Hi, I'm Dr. Noopur. I'm a consultant pediatrician at Oracle Child Care Clinic. It's my own clinic, and I'm also a consultant pediatrician at Center Point Hospital, Nagpur. Um, I'm a pediatrician and neonatologist, and also certified in early learning, the best way program. Wow. So when we have two experts over here, what can we ask more for? While we know that there is no right way to deal with toddlers' tantrums, and over here, experts have their own way to work it out. Toddler tantrums can be ranging from screaming, kicking, hitting, or even breath holding. And over here, we are going to discuss about the same. So, coming to the question, Dr. Santosh, why does a kid have a tantrum and how do I control my child's tantrum? Can you share your thoughts on this? Yes. So in my OPD, when parents come with complaint, doctor, my baby is 1 year old, and he was very obedient child. Well, he was not used to harass us, right? He was very calm, composed child, and suddenly he has his own opinion now, right? He start crying. He wants. He will eat whatever he wants. He have his own decision. The parents are worried, but money man, I am very happy. That Right, means that my baby's brain is absolutely normal, right? My baby's brain is absolutely normal, and plus my baby is giving a window to my parents that in future कि आगे भी if I'm throwing issues, yeah, I have my opinion, so you can improve it or you can give your valuable inputs, and with that I can improve myself. So temper tantrum is normal between 1 to 4 years of age, and it is absolutely normal. Parents, you should not at all worry. अगर आपका बेबी टेम्पर टेंट्रम थ्रो कर रहा है, you should be happy, right? अब बच्चा टेम्पर टेंट्रम थ्रो क्यों करता है? इनिशियली 1 ईयर से 2 ईयर्स में टेम्पर टेंट्रम थ्रो करता है बिकॉज बेबी डोंट नो हाउ व्हाट टू डू, हाउ टू एक्सप्रेस. सपोज पहले स्टार्टिंग में करता है, ही डोंट वांट टू ईट बट ही कैन नॉट टेल यू, तो ही क्राइज. 2 ईयर्स में आएगा, उसका ओपिनियन बन गया, ही वांट्स दैट पर्टिकुलर चीज या कार चाहिए बट आप नहीं ले रहे, उसके लिए करेगा. एंड right, 3 to 4 ईयर्स में उसको स्कूल नहीं जाना है, उसके लिए करेगा. नाउ हियर कम्स अ इम्पॉर्टेंट थिंग कि हाउ यू हैंडल बीइंग अ पेरेंट. अगर स्टार्टिंग में आपके बेबी ने टेम्पर टेंट्रम थ्रो किया और आपने उसकी सारी बात मान ली, राइट, दैट इज परमिसिव पेरेंटिंग, तो वो आपके बेबी हमेशा वो टेम्पर टेंट्रम थ्रो करता रहेगा. सो टेक होम मैसेज या इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर आपका बेबी टेम्पर टेंट्रम थ्रो कर रहा है, सो एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम यू विल हैव टू बी काम, कंपोज, डू नॉट गो इन या डू नॉट बी सबमिसिव
just relax, chill and give your baby space for that time. And जब वो टेम्पर टेंट्रम थ्रो हो जाए, उसके बाद once your baby is in your zone, उस टाइम पे talk with your baby and discuss it out कि क्यों किया था and how to deal with it, right? Right. Thank you, Dr. Santosh, for this wonderful insights. Dr. Nupur, I have a question for you. What should a parent should not do when the child is throwing tantrums? Dr. Santosh has given us few guidelines, but could you add some more points to this, please? द फर्स्ट बिग नो नो इज, आप बेबी के ऊपर स्क्रीम ना करें, उसको हिट ना करें, या फिर जो मतलब उसको बहुत जोर से, हाँ, हिटिंग, स्क्रीमिंग एंड अदर थिंग इज कि आप उसको छोड़ के चले जाए वहाँ पे, मतलब ऐसे बोलते हैं कि ठीक है वो रूम में है तो रूम छोड़ के आप कहीं बाहर चले गए, दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू। उसको प्रॉपर अटेंशन देना है, मतलब वहाँ पे रह के, काम रह के ही अटेंशन देना है। एंड उसको उसका पूरा खुद को काम होने दीजिए, इसके बाद आपको जो करना है कीजिए, बट स्क्रीमिंग एंड हिटिंग इज नॉट द राइट वे। अदर थिंग इज, आप सब में से, और जैसे डॉक्टर संतोष सर ने बोला है कि आपको उसके टैंट्रम में सबमिसिव नहीं होना है, मतलब जो भी वो डिमांड करता है, अगर वो क्राई कर रहा है या कुछ हिट कर रहा है तो उसके लिए आपको सबमिसिव नहीं होना है। जस्ट स्टे देयर एंड सी कि वो बेबी सेफ है, वो कुछ ज़्यादा खुद को हार्म नहीं कर रहा है, इंजर नहीं कर रहा है। एंड अगर बहुत ज़्यादा टैंट्रम शो कर रहा है, वैसे तो टैंट्रम्स आर बिनाइन, वो उसके लिए बहुत कुछ ट्रीटमेंट की वगैरह ज़रूरत नहीं रहती, बट दे आर मोर इन नंबर्स। ऐसे कुछ स्टडीज़ में देखा गया है कि जिन बच्चों में स्पीच डिले होता है वो बच्चे ज़्यादा टैंट्रम शो करते हैं, तो वो टाइम पे पेरेंट्स को ध्यान देना पड़ेगा कि स्पीच डिले है या कुछ है, तो फिर आप अपने पीडियाट्रिशियन से कंसर्न कीजिए। Right. Thank you, Nupur, for Dr. Nupur, for your thoughts. Dr. Santosh, coming back to you. What are the 5 things that you should do to handle a child having a temper tantrum as a parent? So, Uh, Before that, I'll just add one thing. What the thing I forgot? Ki parents, just remember, there are two part of brain: the right part of brain and the left part of brain. The right part of brain is emotional part of brain, and the left part of brain is the logical part of the brain. तो जब बच्चा born होता है, तो emotional part of the brain is very active and it is very dominant, and logical part of brain is not active, not dominant. तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे हम कहते हैं कि बेबी का ब्रेन 5 years में एकदम ग्रो हो जाता है, तो इमोशनल पार्ट ऑफ ब्रेन हमेशा एक्टिव रहता है, लॉजिकल पार्ट नहीं रहता है। सो ये जो टेम्पर टेंट्रम है, दैट इज अ काइंड ऑफ इमोशंस शोइंग टू द थिंग्स, राइट? इफ योर बेबी वांट्स एनीथिंग, कुछ भी, तो वो इमोशन है मेरे बेबी का टेम्पर टेंट्रम जो थ्रो कर रहा है, एंड लॉजिकल पार्ट नहीं है। सो अब व्हाट वी हैव टू डू एज अ पेरेंट इज to go in my babies या make communication with the emotional part of brain, and emotional part of brain के साथ communication करके slowly उसका logical part of the brain को activate करना। For an example, suppose आपका 3 year का old baby temper tantrum throw कर रहा है, राइट? वो उसको एक 25,000 का कार चाहिए, वो मॉल में है और मॉल के नीचे वो गिर रहा है, हेड बैंग कर रहा है, लेटा हुआ है, राइट? तो अगर उस टाइम पे आप उसको जाके मारोगे, जोर से चिल्लाओगे या बहुत ज्यादा उसको गिव इन कर दोगे, दे दोगे, तो दैट इज अ रॉन्ग मैसेज। मतलब उसका इमोशनल पार्ट ऑफ ब्रेन को आपने एक्टिवेट ही नहीं किया, आपने उसको जो चाहिए दे दिया, तो वो यही सोचेगा कि मुझे मिल जाएगा। तो उस टाइम पे व्हाट यू हैव टू डू इज, फर्स्ट थिंग, जो 5 चीज जो मैम ने पूछा, जो आई एम गोइंग टू टेल यू इज बी काम, राइट? जस्ट बी काम। अगर हो सके तो मूव आउट ऑफ दैट एरिया, राइट? सेकेंड थिंग। थर्ड, डू नॉट गिव इन। आपको अंदर जाके उससे लड़ना, मारना या उसकी बात नहीं माननी है। लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपको पता है ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या है, उससे पहले आप जाके उसे इन्वॉल्व कर लें, राइट? तो 5 चीज मैंने बोला, right, शांत रहिए, काम रहिए, इन्वॉल्व हो जाओ। right, देन
डू नॉट उसकी बात मानो नहीं, जाके लड़ाई चिल्लाना नहीं है उसको। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एक बार ये प्रोसेस हो जाए उसके बाद डिस्कस, राइट। फॉर करेक्ट। दिस एग्जांपल ओनली, जैसे बच्चा रो रहा था, आप गए उसके पास, आपको ये 20 ये कार चाहिए आपको, ओके चलो ले लेते हैं। तो आपने क्या किया, आपने इमोशनल पार्ट ऑफ ब्रेन के साथ कम्युनिकेशन कर दिया कि मम्मा इज विथ मी, मम्मा इज लिसनिंग टू मी, राइट। एंड करेक्ट। उसके बाद यू करेक्ट। से कि 25,000 का है, आप थ्री हम 5,000 का ले सकते हैं, एंड 20,000 हम सेव कर सकते हैं जो हम फ्यूचर में यूज करें या फिर आपके किसी नीडी पर्सन को दे दें। तो जैसे ही यू टेल मी व्हाट वी नीड, व्हाट वी शुड डू, तो जैसे ही आपने अपने बेबी को क्वेश्चन पूछा व्हाई, तो इसका जो इमोशनल पार्ट ऑफ ब्रेन है वो ट्रिगर करता है लॉजिकल पार्ट ऑफ ब्रेन को कि आंसर दे आंसर दे आंसर दे। एंड दिस इज हाउ टेम्पर टेंट्रम्स हेल्प अस। टेम्पर टेंट्रल टेम्पर टेंट्रम हेल्प अस टू एंटर माय बेबीज ब्रेन एंड एक्टिवेट लॉजिकल पार्ट। और यही बेबीज जो 5 इयर्स तक टेम्पर टेंट्रम थ्रो करते हैं, 6 इयर्स पे क्वेश्चंस क्वेश्चंस, पापा ये क्या है, वो क्यों होता है, ये कैसे करना है, मुझे ये चाहिए बट ये क्यों चाहिए, ये मैं कैसे करूं, ये एबिलिटीज आती हैं। तो पेरेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपका बेबी टेम्पर टेंट्रम थ्रो करता है तो जस्ट आस्क व्हाई, क्यों कर रहा है। वंस योर बेबी शांत, राइट, ओके। होपफुली मैंने आपके 5 पॉइंट्स दे दिए होंगे इसमें। यस, डेफिनेटली। और आपने बहुत अच्छी फिलॉसफी ये भी बताई कि पेशेंस इज द की टू की, यस, हैंडलिंग एवरीथिंग। बट यस, दैट थैंक यू, दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल insight that you gave in. And coming to Dr. Nupur, कि how do parents discipline their child during after the tantrums? So uh, your thoughts will be very important over here. सो चाइल्ड, आपको टैंट्रम्स मैनेज भी करने हैं और टैंट्रम्स अवॉइड भी करने हैं। ये चीज़ के लिए Right. कैसे करना है मैं आपको बताऊंगी। द शॉर्ट फॉर्म इज काम, CALM। काम इज लाइक फर्स्ट कम्युनिकेशन स्किल्स। आप हमेशा बच्चे पेरेंट्स को ही इमिटेट करते हैं। सो अगर पेरेंट्स एक दूसरे के साथ बात नहीं करेंगे, वो एक दूसरे के ऊपर शाउट करेंगे या उनके इमोशंस जो भी प्रॉब्लम्स है वो बच्चों के सामने आएंगे, तो बच्चे भी वही इमिटेट करेंगे। तो उनको ये लगेगा कि नहीं, जब भी कोई चिल्लाता है तो uh, उनको वो चीज़ मिल जाती है। सो फर्स्ट थिंग इज Yes. कम्युनिकेशन स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आपके बेबी को कैसे, उसने कैसे कम्युनिकेशन करना चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप जो बताओगे, आप जैसे दिखाओगे, वो वही करेगा। सेकेंड थिंग इज अटेंड टू द चाइल्ड्स नीड्स। ओके, सो हर बच्चे का अपना एक इमोशनल फेज रहता है, जैसे अभी सर ने बहुत अच्छे से समझाया वो चीज़। इमोशनल नीड्स रहती है, फिजिकल नीड्स रहती है, कुछ भी जो भी नीड्स है। टैंट्रम्स कोई भी चीज़ के लिए बच्चे शो कर सकते हैं। अगर उनको हंगर है, मतलब बहुत भूख लगी है, उनके स्लीप स्लीप डिप्राइव्ड है, या फिर वो सिक है, कुछ किसी भी चीज़ में वो टैंट्रम शो कर सकते हैं। तो वो ट्रिगर्स जो रहते हैं वो अवॉइड कीजिए। आप आपके बच्चे को उतना अटेंशन दीजिए, उसकी नीड्स को समझिए, एंड देन यू कैन। और ये जो ट्रिगर्स आप अवॉइड करोगे तो बाद टैंट्रम्स के बाद के डिसिप्लिन करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ हेल्प ये करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद Right. द L stands for let the child feel his feelings. Okay, so express his feelings. आप अगर आपके हाँ पार्टनर के जे साथ एमने प्रॉपरली जम्मू है तो सब मोकला चीज़ है। एक्सप्रेस करोगे, आप आपके चाइल्ड के साथ प्रॉपरली सब चीज़ एक्सप्रेस करोगे, तो वो भी हर चीज़ एक्सप्रेस करने में, तो अगर वो अपनी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है तो वो टैंट्रम शो ही नहीं करेगा। इसीलिए Okay. मैंने पहले जो बोला था, स्पीच डिले वाले बच्चों में टैंट्रम्स ज़्यादा देखे जाते हैं क्योंकि वो अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो आप जितनी ज़्यादा एक्सप्रेस करने की कोशिश करोगे वो उतना ज़्यादा आपको हेल्प होगा। एंड लास्ट थिंग इज आपको डिसिप्लिन, उसके डेली रूटीन में डिसिप्लिन रखना है। उसके मील टाइम्स प्रॉपर रखने हैं, उसके नैप टाइम्स प्रॉपर रखने हैं, क्योंकि ये तो 4 to 6 के ईयर्स तक कम हो जाएंगे ये सारे टाइम। तो वो टाइम पे डेली नैप टाइम और ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन रखनी है। ये एज में अगर आप प्रॉपर उनका डेली रूटीन मेंटेन रखोगे तो आगे उनके डेली रूटीन में भी हेल्प होगा और प्रॉपर ग्रोथ में भी हेल्प होगा और टैंट्रम्स भी लिमिट हो सकते Right. Very rightly put up over here, Dr. Nupur. Um, so the mothers have understood that age plays a very important role, and over here
handling the child with utmost calm is very, very essential. But we do have some user, questions, and I would like both of you all to speak about it. The first question from the audience is that when should I call my doctor when my child is having extreme tantrum issues? See, calling a doctor will not help you first. If my Okay. baby is having extreme temper tantrum, that means we need a therapy. That is Okay. family therapy and parents therapy, not the baby therapy. Because as ma'am Nupur ma'am said कि अगर there is no speech delay या baby को receive perceive करने में there is no issue, तो the biggest culprit for the temper tantrum है, that are the family members, right? Okay. So Yes. agar if the temper tantrum is very severe, that lasts for more than 15 minutes, it is very often very frequent, or the temper tantrum is violent, then you should definitely go and visit your doc. Why it is needed? Because here he is going to tell you, he is going to explain you how to deal with my baby, how to identify the trigger factor. He may give you a book to write it down कि क्या क्या triggering factors हैं, कैसे करना है. So it is very important for you. There are many parents who never take blame on themselves. नहीं, हमने तो कुछ नहीं किया. मैंने बोला हाँ. कितना मोबाइल फोन देते हो? मोबाइल फोन तो सब देते हैं. खाते वक्त तो मोबाइल फोन नहीं दिया तो खाना नहीं खाते हैं. कब सोते हैं? रात को 11-12 बज जाते हैं क्योंकि हम मूवी देखते हैं. तो कल्प्रिट आप ही हैं, बिकॉज यू आर द वन हु आर नॉट सेटिंग अ लिमिट स्ट्रक्चर्स टू माय बेबी, एंड सडनली वन फाइन डे एट 4 years या 5 years you want your baby to behave well. It is Okay. not going to come. Understand, baby do what they see. So if you are not behaving well, if you husband wife fight in front of me, my baby definitely is going to do the same thing because he think that is a normal thing. So it is very important parents कि understand कि culprit if your baby is throwing persistent temper tantrum is you or dada dadis, right? Because if mom is strict enough but dada dadi या वो उस टाइम पे मना कर देते कि नो, आप इसको मत चिल्लाओ, बेबी समझ जाता है कि there is a godfather above me who is going to help me in everything, and suddenly same dada dadi at 5 years will tell you कि बच्चा कंट्रोल में नहीं रहता, कैसे मॉम डेड हुआ, right? So very important to visit doctor if the temper tantrum is severe, it very frequent, uh, lasting for long time, more than 15-20 minutes, and if it is violent या head bang करता है या breathe रोक लेता है जिससे वो साइनोसिस हो जाता है या खुद को इंजर्ड करता है या आपको बहुत जोर से बाइट करता है, तो you should go to doctor. Okay. Thank you, Dr. Santosh, for your lovely insights. Ma'am, coming to you, Dr. Noopur, what Yeah. is the right age for the child should stop having tantrums? आज इसके पहले ही ये आंसर सर ने दे दिया था कि 4 to 6 years पे टेम्पर टैंट्रम्स मोस्टली स्टॉप हो जाते हैं. मोस्टली वी कंसिडर इट एट 4 बिकॉज इमोशनल और लॉजिकल जो सर ने एक्सप्लेन किया था पहले ही कि वो कंपोनेंट्स प्रॉपर डेवलप हो जाते हैं एंड दे विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू हैंडल देयर इमोशंस. सो दैट विल बी द राइट एज. और ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है अगर आपके आई एम नॉट सेइंग बैड पेरेंटिंग, बट आप अगर Okay. आपके इमोशनल जैसे अभी सर ने बोला था कि आपके फैमिली एनवायरनमेंट में कैसे आपका फैमिली एनवायरनमेंट कैसा है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि वो बच्चा कितने जल्दी अपने टैंट्रम समझने में समझ सकता है. Okay. Fine. So with this, we come to the end of the questions from the users, and we had a lovely session. But before we begin, before we end, come to the end, I would like you both the doctors to give a takeaway message to our audience and the moms community over here. So, Dr. Santosh, can you please help us with a takeaway message that the audience can take from this session? Parents, if your baby is showing tantrum, be happy, sit down in calm and think क्यों थ्रो कर रहा है and how to deal with it. Always brain and logical part of brain, right? जैसे आप ये सोचेंगे and ask why to your baby, your all queries will be solved and your baby will be absolutely fine. And please see your parenting style, whether it is permissive, authoritarian, authoritative, yeah, uninvolved, because your parenting style plays very important role in your baby's behavior.
Right. Thank you. Thank you. Thank you so much. Dr. Nupur, can you give us a takeaway message for the audience, please? Takeaway message is only calm, communication skills, attend to the child needs, uh, let the child show his feelings, and last is manage his daily routines. That is such a beautiful four-letter word, but such has a very deep meaning. Well, I thank the panelists who joined us for the session today. It was wonderful to Dr. Santosh and Dr. Nupur having you over here. And we at Baby Chakra pledge to come up with such more live sessions with the experts. So if you are looking for a solution, these doctors are available on the Baby Chakra app. You can download the app and you can ask your queries to them. So, thank you, doctors, for sparing your Thank you. valuable time. It Thank was you. wonderful having you both here. Thank you. Thank you, Dr. Nupur ma'am. Thank you, Pooja Same. ji. Same here. Bye. Thank you. Bye. Bye.